So, my dear XAT aspirant, here is my 2 cents to you, all of you, for your examination called XAT. What to do? I think most of you know what to do, right? I shall be focusing on what not to do in XAT 2024. Along with that, I will also give you some tips on your essay writing, some tips on how you can manage your time, and how you can maximize your score. So if you are appearing for that, and this particular video can be of a great help to you. First of all, that examination में क्या नहीं करना है? The questions are gonna be longer, right? Lengthier, layered, right? लंबे भी होंगे, solution भी लंबा निकलेगा, और layered भी होंगे. But we are not supposed to get stuck up at one question. No doubt, the definition of getting stuck up will be beyond 3 minutes, but specifically in quantitative aptitude, if you are not getting any answer up to 3 minutes, probably you should do it in the second attempt at the later stage. Because there is no sectional time limit, there is a tendency that you may end up spending too much time on one question ki bas abhi aaya, bas abhi aaya, bas abhi aaya, right? So the first thing which you should not do at all to get stuck in one question. If one question is taking more than 3 minutes, 1 more minute, 4 minute, cut, cut, cut. Nothing should go beyond 4 minutes. Are you getting it? Maximum 3 minutes, but बहुत ही आपको लग रहा है कि यार बस आ गया है मेरा, सब कुछ निकल गया है. I have to calculate the surface area and I'm just left with one thing, just 1 more minute. Second, many people, they think that 0.1% negative is there. They, in the end, they go for wild guessing. Tuck, 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 tuck. No wild guessing. Why? Because you are gonna get 0.1 negative because of not attempting questions beyond 8 questions. But if you will mark it wrong, the probability will not be in your favor and you will get 0.25 negative, right? So you should be very careful while attempting, while guessing the question. In what circumstances, sir, can we guess? There are 2 circumstances. One, questions of decision making. My advice would be go all over the decision making questions, because decision making question you should be able to read, you should be able to make opinion, you should be able to identify 2 options. So bhai koi na koi option to answer aayega hi aayega. So if you are stuck between 3 options, you can very well guess any of the 3 options, that there is a fair chance that will get right. Another thing is you can guess is when you have got, eliminated 2 options. Let us say in quantitative aptitude, 2 options are giving you negative value, your answer has to be positive. So that one can thing be done. Third thing which you should avoid beyond getting stuck and doing wild guessing is overthinking. This usually happens with questions of critical reasoning, right? If you are not straight away getting the answer, better to do it in second go. But if you are able to get the answer, do it, mark it, leave it. Don't keep on thinking about same option again and again, again and again, again. You should be able to decide quickly whether you are getting it or not, or you are guessing it. Either you are getting it or you are guessing it. Sometimes we keep thinking so that we may get the answer. No. Got it? It should be avoided. Overthinking also, cripples your performance in decision making. Many students, what they do is, first they do decision making. In the end, they again come and again read the whole passage and again attempt reading decision making questions. तो पहले जो C mark किया होता है उसको D कर देते हैं, D को E कर देते हैं. So I haven't seen much gain in those cases. You end up wasting more time. So when you are doing decision making at the first slot, make sure you are giving enough time to the question and you are surely not coming back to that question. Got it? Many students, they go with a mindset, right, that it is too difficult exam. I have just come for experiencing this XAT for next year.
No, my dear boy, you never know when it can be your day. Got it? You may be doing it for first time, but that is such an examination that you may shine on a particular day, because the sections, they vary a lot in difficulty level, and you can manage your time very well. And by scoring good in one section, still you can get into a good college, right? Because there are many colleges who will not look for the individual cutoffs. Got it? Now, coming to this thing is, always make this symbol. Yes, no, let it go. है ना? You can do it physically also in the paper. You know, ये बहुत help करता है technique. पे question देखते ही, yes, right? Then no, let it go. है ना? Can we all do this, right? It may look a bit funny to the person sitting next to you, but you should do it. It will keep you energetic, right? And your thought process should go on. ऐसे पूरा नहीं करना, इतना शेक नहीं करना, तो ऐसा सोच लो, yes, no, let it go. Got it? So this will be very much applicable in your quantitative aptitude ka 28 questions. Today, when we were discussing 2020 ka paper, right, many of the question within 7 or 8 seconds, people were able to decide whether to do it or not do it. Maximum 10 seconds, maximum 15 seconds, you should have made this decision. Are you getting it? This will give you with a plenty of time to solve the doable question. Okay. As I always said, it is about test cricket. The XAT is very similar to test cricket. So 3 things: commitment, consistency, and class will come into play. What is the commitment? कि भाई 2.5 घंटे, 2 hours 55 minutes, not 2.5 घंटे, 2 hours 55 minutes एकदम committed रहना है, एनर्जी डाउन नहीं करने देना, ऐसा नहीं लेड बैक पेपर नहीं करना है, एकदम एनर्जेटिक करना है. ठीक हो गया? और आपका क्लास ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगा. Right? This is how I, scored 99 without even getting, this your verbal एक भी नहीं किया था. तो ZAT में ये possible होता है. Overall बहुत अच्छा percentile करना despite doing bad in one section. Are you getting? Okay. Now, there are 3 different time what I suggest. Can you see this? 45, 45, 45 in all 3 scenarios. What does it mean, 45, 45, 45? 45 minutes for decision making, right? You can do plus minus 5, depending on your speed of reading. But by and large, it will take 45 minutes because you will get 7 to 8 sets, right? So one set usually takes 6 to 7 minutes. So it will be approximately 45 minutes. But you should not take it to 1 hour 20 minutes, 1 hour 10. किसी भी हालत में it will not go beyond 1 hour, right? In case there are LR questions inside the decision making, please rearrange your scoring accordingly. By and large, 2 minutes per question, right? Let us say there are 6 questions of LR, so you can do them later, right? Because they are usually time consuming. I don't want you to get stuck into that. Second is, depending on, what is your strategy, what is your strength and weakness. If both of your sections are balanced, right? Balance, then your time allocation should be the first one. 60 minutes to this, 60 minutes to this. Remaining 10 minutes, you can decide where you want to spend. Around 20 minutes you will have. This time breakup is 165 minutes. Total, you are gonna having 175 minutes. So you have 10 minutes extra, which you can bifurcate. But let us say you are having your verbal or quant very strong. तुम्हें लगता है कि यार मेरा visible difference है, right? Then do spend 70 minutes on your strong section, right? By trying to attempt it fully, end to end, खत्म करो, कोई problem नहीं है. Got it? और थर्ड स्ट्रेटजी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट बहुत लोग यूज करते हैं कि पहले वीक सेक्शन कर लें, उसको अपना 50 मिनट ही करना है, जितना हो जाए ठीक है उसमें से. लेट अस से यू फियर क्वांट, राइट? सो इफ यू आर एबल टू मैनेज द मिनिमम आउट ऑफ दैट, गुड.
बट अगर ये खराब हो गया, इट विल इफेक्ट योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड द सेकंड स्ट्रेटजी, राइट, where you have spending 70 minutes on your strong section, right? This will give you ओवरऑल स्कोर. क्योंकि अगर आपका सच्ची में क्वांट स्ट्रांग है ना यार, और आपने 16 17 18 क्वेश्चन कर दिए तो बल्ले बल्ले हो गई. आपका अगर वर्बल स्ट्रांग है, आपने 16 17 18 20 क्वेश्चन कर दिए तो बल्ले बल्ले होगी, राइट. मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि these 10 minutes will enable you high accuracy. Got it? क्योंकि जैसे मेरा कोई क्वेश्चन है भाई, मैं क्वांट में क्वेश्चन कर रहा हूं. नाउ इफ आई एम स्टक ऑन दैट क्वेश्चन, आई शुड हैव अ टाइम टू कम बैक. यू शुड ब्रेक दी 70 minutes into 2 rounds at least. Are you getting it? First round should not take more than 30 minutes. Are you clear with it? First round 30 minutes में kill करना है भाई. And there my expectation is not more than 10 minutes. 10 questions. Okay? मतलब क्या करना है? क्वेश्चन देखा, आता है करो, नहीं तो नेक्स्ट, आता है करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पूरा पेपर गो थ्रू हो गया, राइट. 20 क्वेश्चन. लेट मी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. 28 क्वेश्चंस. गॉट इट? So out of 28 questions, 20 questions you have browsed through and 8 questions you have to do. So if 20 questions that you are browsing, it's taking on an average 10 to 15 to 20 seconds to browse, right? It will take 5 minutes. Are you getting my point? Rest 25 minutes, you should be solving 10 questions with an average of 2.5, 3 minutes. Because those are those questions which you have selected. They should not take more than 2.5 minutes. Got it? And any question which is taking more time, you have rejected. Same applies to this thing, your verbal also. There will be some 3-4 critical reasoning or grammar question, or maybe the RC, where you say, okay, यार ये RC तो एकदम socialism पे है, मेरे को socialism का बहुत अच्छा command है, I can do this very well. Got it? So that is what will be the second part of our first half of my 70 minutes. First 30 minutes, I should be doing the question which I am able to do. Right? 8 to 10, good enough. Now, out of the 20 question which you have bypassed, you should be either bypassing it as leaving it as such or marking it. Because I said no, yes, no, let it go. Now, if it is a yes question, you are doing right now. If it is a no question, you are doing nothing. But if it is let it go question, you are marking it. So out of 20 questions, you may end up marking 5, 10 questions, right? Now, next 20, 25 minutes of yours should be focused on those 5 questions. Are you getting? समझ आया? फंडा समझ में आया भाई मेरा आपको? ये 70 मिनट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स, 30 minutes, 20 minutes, 20 minutes. First 30 minutes, all those questions which you could reap in very easily. Next 25 question, 20, 25 minutes on those questions which require time, which require thinking. 5, 6, 4, 5 questions, not more than that. And last 20 minutes on maybe 2 questions, right? Which you think they are gonna take. एक बहुत बड़ा सर्कल दिया, उसके अंदर सर्कल उसका कोई वैल्यू निकालना है. It is taking a lot of time, but आपको पता है कि निकल जाएगा. It's only calculation. There is a DI set which requires a lot of calculation, a table to be made. Do that thing. Even if in 20 minutes you are getting 2 questions, good enough, right? It is like the session of the cricket. अगर आपने विकेट लूज नहीं किया और 10 रन भी बना दिए ना लास्ट एंडिंग सेशन में, more than enough. Got it? Coming to beta third and the last session, one thing I must remind each one of you, इसी सेक्शन में आके लोगों का तुक्का चलता है, चक दे फटे. फर्स्ट 2 आवर्स सब लोग एकदम पेशेंट रहते हैं, बड़ी समझदारी से पेपर करते हैं. लास्ट वाला 30 मिनट्स एवरीवन इज लाइक बी आ जाएगा, आ जाएगा, बी ही होगा, आ नहीं रहा है आंसर. जस्ट टू इंक्रीज द अटेम्प्ट, जस्ट टू फील गुड, you are marking the answer. Please don't do this thing. Last section is always, when it is your weak section, is very cautious and only doable question with 200% accuracy should be done, or question where you are able to eliminate the option, right?
please don't do wild guessing in specifically in your section, right, which is weak. अगर करना भी है ना स्ट्रॉन्ग सेक्शन में टाइम लगाओ, घपला करो. करना भी है डीएम को करो पूरा. अपने वीक सेक्शन में ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं गेन करना है. समझ आ गया? एंड ये भी नहीं करना कि पूरे का पूरा टाइम दूसरे सेक्शन को दे दो भाई. नो, यू शुड बी स्पेंडिंग मिनिमम 50 मिनट्स ऑन दैट सेक्शन, क्योंकि स्टिल यू हैव 70-80 मिनट्स फॉर अनदर सेक्शन. कट इट. आना होगा आपका जो उसमें आ जाएगा 70, उसके बियॉन्ड नेगेटिव ही खरीदोगे आप, पॉजिटिव नहीं खरीदने वाले. ओके माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी विच पीपल से फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी चूज कर लीजिए. थर्ड strategy is a dangerous strategy where you start with your strong or weak section and you do DM at the last, but choice will be yours, right? I always do with the third strategy, right, personally, but I recommend students to go with first or second strategy, right, because my approach is to attempt all 28 questions in the 1.5 hour. That's how I plan my paper. Got it? But you should not follow what I am doing, because that is, we have a different purpose of appearing the examination, right? As a student, it is always good if you are able to do DM first. But yes, if you have tried any of these strategy, keep that strategy as your final strategy, right? Do not try anything new strategy in this, because this may ruin your case. So you should go with your strategy. Jinka strategy nahi bana hai, those people can use either first or second strategy, right? हाँ, ये फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई आपको. उदय, कंट्रोल कंट्रोल बहुत मन करेगा, क्योंकि लंबा पेपर है ना आपका और सभी सेक्शन ओपन है, राइट? समझ रहे हो? कैट में क्या है, अगर आप क्वांट पे पहुंच गए, देन आपका मन कर रहा है कि वर्बल की अटेम्प्ट बढ़ा लूं, बढ़ा नहीं सकते. यहां पे क्या है, ऑप्शन है आपके पास. क्वांट कर रहे हैं, करते करते आपको मन में आया, अरे यार मेरा तो कैट जैट होगा ही नहीं, वर्बल के तो मैंने 12 ही क्वेश्चन किए हैं, राइट, कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी, चल वापस क्वांट बीच में छोड़ दिया. सेक्शन शफलिंग लॉक बहुत करते हैं, और शफल करके वो सब क्वेश्चन करते हैं जो पहले कर चुके हैं दोबारा से. कई बार वो क्वेश्चन करते हैं जो पहले डिसाइड किया था कि नहीं करना है. समटाइम्स, but only sometimes it gives you result. Most of the time it backfires, right? So shuffling too much between the sections is not recommended, and you have to control while doing wild guessing, right? Control. मैंने बोला ना, yes, no, let it go, और जब कुछ नहीं, control. ऐसा बोलने का है उधर, ठीक है? ऐसा ना हो कि सेंटर के ऊपर सब लोग बोल रहे कंट्रोल कंट्रोल. इन्विजिलेटर दुखी हो रहा है, क्या हो रहा है? So boys and girls, my 5 mantras I have told you, right? I'm repeating you again. First, treat it as like a test match. Then practice the yes, no, let it go thing. Then the next thing is you should know which section to do, when to do. Time management, allocation is very, very important. And last but not the least is to control your emotions, right? Now coming to the next two sessions, GK and essay. Okay. For GK, there is only one tip. That tip is do it first, because it will be combined 30 minutes that you will get, right? So you should finish your GK question maximum within 10 minutes. 6 minutes. 10 minutes. 5. तो पहले क्या करेंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे जाके, रीड द ऐसे पढ़ लिया आपने, start doing GK question. आपके माइंड में you are getting points, keep noting those points. टप 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 टप. Got it? Points नोट करते रहेंगे आप. Are you clear on this? While what you are doing? You are writing your GK paper. You are noting down the points that are coming to your mind. Now, once you are writing your essay, here is few tips that I have made it for you. First, include a variety of points. Very simple. It should not be monotonous. Many people, they try and explain in the whole
ऐसे ओनली 1 पॉइंट, नो भाई, 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, राइट? अलग 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 डायमेंशन से पॉइंट्स देने हैं। क्या डायमेंशन है सुन लो, 5 पीस, 5 पीस। पीपल, पीपल रिलेटेड टू दैट, इंडिया के पीपल, राइट? बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्ल्स, बॉयज, हाउ पीपल आर इफेक्टेड, राइट? सेकंड, प्रोफेशंस, प्रोफेशन, इंजीनियर कैसे इफेक्ट होता है, राइट? डॉक्टर कैसे इम्पैक्ट होता है, डिफरेंट प्रोफेशंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, राइट? अलग 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 प्रोफेशन जो हैं वो इसको कैसे सोचेंगे। अगर लॉयर को ये पॉइंट सोचना तो कैसे सोचेगा, अगर एक सिविल इंजीनियर इस पॉइंट को सोचेगा तो कैसे सोचेगा, राइट? तीसरा, what are the problems associated with it, both long term, both short term? Okay, what are the problems associated with, think this topic given, what are the problems, long term problem, short term problem? Third, what are the possibilities, possibilities कौन कौन सा है, राइट? क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है कंट्री के अंदर, पॉसिबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी लगाओ, ईमानदार लोगों को इंसेंटिवाइज करो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। जो चोर पकड़ा जाए उसको पिनलाइज करो, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, दैट पी मीन्स टॉक अबाउट द प्रोसेसेस, राइट? गॉट इट? प्रोसेसेस कैसे कैसे करते हैं, इंडिया में कैसे करते हैं, बाहर प्लेसेस कह लो, प्रोसेसेस कह लो, यूक्रेन क्या इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज जस्ट रफ 5 डायमेंशंस आई हैव गिवन टू यू, पीपल, प्रोफेशंस, प्लेसेस, प्रोसेसेस, प्रॉब्लम, थिंक इन डिफरेंट वे। कोई भी टॉपिक दिया है यू विल गेट इट। ओके, 3 मेन पार्ट्स ऑफ एन essay: ओपनिंग, मेन बॉडी, एंड देन क्लोजिंग। गॉट इट? ओपनिंग में ओपनिंग एंड इंट्रोडक्शन के 2 छोटे सब पार्ट्स बना सकते हैं, ऐसे ही कंक्लूजन और क्लोजिंग के 2 पार्ट्स बना सकते हैं। सर इनमें फर्क क्या है? बेटा, ओपनिंग मीन जैसे आप कोई शेयर से स्टार्ट करते हैं, किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, वो ओपनिंग हो गया। गॉट इट? इंट्रोडक्शन हो गया व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, राइट? Whereas in opening you are indirectly talking about the subject matter. You got that? And same in the conclusion. Conclusion is where you are just concluding what you have discussed. Where closing is where you are giving kind of a final remarks which need not directly linked with the main passage, right? वही बात नहीं कहना, उसका एक स्टायरिकल एंड भी कर सकते हैं। सेम वे यू कैन हैव ए स्टायरिकल ओपनिंग ऑल्सो, एंड इन मिडल you should have main argument, supporting argument, example, discussion and analysis. Got it? Next thing, the introduction has to be direct and relevant. इसीलिए हमने opening अलग कर दिया है। Got it? Many students made this mistake. They keep, beating around the bush. First paragraph, person should be able to connect to the main topic. Opening should not be more than 2 lines. Okay? Then there are many people, there are many students who start using redundant quotations, cliches, right? You can use it like salt in this thing, salt in your vegetable. You can use it like garnishing with the dry fruit, but don't put too much of the dry fruit so that the person may lose the text of original recipe you are cooking. Got it? मटर पनीर में 2-4 काजू, द्राक्ष, डेट्स डालना ठीक है, पर काजू से भर देना, फिर वो काजू मटर पनीर नहीं रहेगा, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, काजू मटर पनीर करना पड़ेगा। समझे भाई? लास्ट थिंग, each of the ideas should be made in a separate paragraph. That's how we are keeping our paragraphs, right? ऐसा नहीं है कि 5 लाइंस हो गया पैराग्राफ चेंज कर देने का। एंड कीप इट वेरी मच इंफॉर्मेटिव और सजेस्टिव और कंस्ट्रक्टिव। थोड़ा मतलब लेक्चर मोड में नहीं जाने का है, स्टायरिकल बहुत ज्यादा नहीं होना है, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है भाई। गॉट इट? ऐसे लिखते समय आई वांट यू टू बी, क्या यू वांट टू बी इंफॉर्मेटिव, सजेस्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। गॉट इट?
2024 में क्या होगा भाई? बढ़िया होगी, इकोनॉमी 7.3% पे ग्रोथ करेगी। किसने प्रोडिक्ट किया बताओ? हु प्रोडिक्टेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 7.3%? एक भी बंदा आप में से इसका आंसर नहीं बता पा रहा है। न्यूज नहीं देखते हो ना आप? सर 7.6 है चलिए। सही डेटा गलत कर दिया। ठीक है। जयशंकर। अरे भाई, कल अगर आपने आज का अखबार पढ़ा होता, कल की न्यूज सुनी होती तो बताते ना भाई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ ने अपना पहला प्रेडिक्शन दिया है दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 7.3%, राइट? और बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया है न्यूज़पेपर में, द हर ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर के अंदर ये आया है, राइट? ऑल इंडिया रेडियो पे सुनेंगे तो भी यही न्यूज आ रही है। समझ आया? तो उसको कंस्ट्रक्टिव लेना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ल्ड इकोनॉमीज आर नॉट going by that time and we are happy that India should be going by that percentage. Okay my dear boy? इंफॉर्मेटिव होने, जैसे मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया ना आपको कि भाई ये एनएसओ ने किया है, 7.3 पे हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, राइट? बट फैक्ट शुड नॉट बी कुक्ड अप फैक्ट्स, दे शुड बी व्हाट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द various sources. Okay, these are the topics that can be there, right? For I'll just tell you, there are topic which could be there. So whatever topic you get, I have given you the brief idea how you can write that essay and how you can go ahead with that, right? So wish you all the very best for your XAT examination. चक दे फटे एकदम बढ़िया तरीके से आपको उस पेपर को देके आना है। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, बताइए, कमेंट में लिखिए। टेल मी द क्वेश्चंस। यस सर। जी सर जैसे आपने बोला कि हमें पेपर स्टार्ट करना है, तो वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग है डीएम अगर है तो उससे स्टार्ट करना है। बट मेरे को कई बार ये होता है मॉक में भी कि स्टार्ट करते मुझे होता है पहले वीए कर लूं, थोड़ा सा वीए कर लूं क्वेश्चंस। आपका सबसे पहला मैंने ये बोला, एनी स्ट्रेटजी विच हैज गिवन यू बेस्ट रिजल्ट, अप्लाई दैट स्ट्रेटजी। इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी देन बेटर टू स्टार्ट विद द डीएम पार्ट। फ्लो में आ जाओगे आप। गॉट इट? यू वांट टू गो अहेड विद द कैट वाला थिंग, पहले वीए फिर डीएम फिर क्वांट, दैट यू कैन आल्सो गो अहेड विद। नहीं सर ऐसे नहीं, जैसे थोड़ा पहले वो कर लिए वीएम के 7-8 क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं वो करके फिर डीएम, उसके बाद थोड़ा क्वांट। Whatever strategies gives you best is good, right? But you should have some strategy. Please don't go without any strategy, right? यस। Okay, बच्चा।